guys, welcome back to my YouTube channel, and today's vlog is going to be all about my evening study grind from 4 p.m. all the way till 1 a.m. I'm usually a morning person, but since I was busy earlier, tonight it's all about the late night hustle. Let's get started. So here I started filming this vlog around 4 p.m. Like what happened today was कि मैं सुबह में काफ़ी बिजी हो गई थी with some work, तो मैं पढ़ाई भी नहीं कर पाई थी. बट नाउ आई फाइनली गॉट टाइम लाइक शाम में. सो आई थॉट कि वाई नॉट टू मेक इट प्रोडक्टिव. सो सबसे पहले मैंने बनाया अपना टू डू लिस्ट एज द रिचुअल गोज़. एंड ईयर आई थॉट सबसे पहले मैं मैथ्स के फॉर्मूला राइटिंग करूँगी, जिसके लिए आई टुक दिस बुक विच इज़ ओसवाल क्वेश्चन बैंक ऑफ क्लास 12th. I mean, this book is awesome, guys. It contains chapter-wise and topic-wise previous year questions with solutions, includes latest CBSE sample papers and board exam pattern. It also helps with quick revision, practice and scoring high in exams. And the best part, explanations are clear and easy to understand. Great for last-minute prep and self-study. So if you also want to get this book, the link is already in the description box. So you can check it out and order for yourself. And then after writing down all the formulas, I decided कि now I'm going to do maths. Like उसमें मुझे PYQ सॉल्व करने थे. So उसके पहले I decided कि चलो एक बार मैं go through कर लेती हूँ अपने लास्ट क्वेश्चन से जो भी मैं लास्ट टाइम की हूँ, and then I will sit and do maths again. फिर काफ़ी देर मैथ्स करने के बाद आई डिसाइडेड कि अब मुझे सब्जेक्ट को स्विच कर देना चाहिए, बिकॉज़ ऑलरेडी काफ़ी टाइम से मैं मैथ्स कर रही थी और मैं अब बोर होने लगी थी. तो मैं कर दी स्विच फिज़िक्स पे, और यहाँ पे मैं कर रही थी अपना काइनेमैटिक्स का रिविज़न. मतलब ये चैप्टर मैं कुछ टाइम पहले ही कंप्लीट की हूँ और ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, तो मुझे इसे रिविज़न करने में टाइम भी लगा. बट या लास्ट टॉपिक के न्यूमेरिकल्स छोड़ के मैंने लाइक पूरे चैप्टर का रिविज़न अच्छे तरीके से कर लिया था.
सो आई वेंट आउट फॉर डिनर दैट डे और फिर मुझे आने में थोड़े लेट हो गए थे, अराउंड 9 o'clock हो गए थे। फिर मैं वहाँ पे वापस आके पढ़ने बैठ गई एंड दिस टाइम आई वॉज डूइंग केमिस्ट्री और इसके मुझे करने थे केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर। Okay, guys, and how can we even forget about our lecture sessions, right? So, yes, now I started with my physics lecture, and it was optics, especially ray optics. And honestly, I don't know why, but I feel a little scared of this chapter. Anything that goes too close to wave just doesn't sit well with me, but that's the fun part too. Tackling the chapters we find tough and making them easier together. So, stay tuned, let's dive in and see how this chapter actually unfolds. By the way, guys, I recently got my hands on this Oswald CBSE Class 12th question bank, and honestly, it's kinda cool. Like everything is arranged chapter wise and concept wise, so you don't have to waste time hunting around for questions. I was just flipping through, and it actually feels super organized. Neat and student friendly. If you are someone who likes things sorted in one place, this is definitely one of those books you would enjoy having around while preparing. Okay guys, so after finishing my study session, it was already around 12:30 and honestly, I was super sleepy, but I still had some editing work left because of a copyright issue. So I got that done and then I realized my laptop wallpaper has been the same for months. So I just changed it to a really beautiful Radha Krishna picture I found on Pinterest and it felt so refreshing. So yes, that's it for today's vlog. I hope you guys enjoyed it. Don't forget to like, subscribe and share and tell me in the comments what's the wallpaper on your laptop or phone right now. Okay, bye bye.